डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सिंगल पार्टिकल। अ पार्टिकल सब्जेक्ट टू अ वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज द कंस्ट्रेंट्स इन विच वर्क डन इज 0 and the particle subject to workless constraint is in equilibrium if and only if 0 virtual work is done by the applied forces in any arbitrary infinitesimal displacement consistent with the constraints. Or infinitesimal displacement, very minute, very little displacement, और consistent mean कि applied forces के साथ भी वही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जो कि कंस्ट्रेंट के साथ है। प्रूफ, लेट द टोटल अप्लाइड फोर्स ऑन द पार्टिकल बी Fa and the total force of constraint is Fc. C for constraint, A for applied. The particle is in equilibrium if and only if total applied force plus total force of constraint यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो दैट इज क्या आ जाएगा, Fa प्लस Fc इक्वल टू 0। इफ डेल्टा R, डेल्टा मीन वेरी स्मॉल, डेल्टा R इज एनी इन्फिनिटेसिमल मीन्स वेरी स्मॉल displacement of the particle consistent with the constraint, the total virtual work will be 0 if and only if total virtual work will be 0 if and only if Fa plus Fc, that means total applied force into displacement work done की डेफिनेशन यही हमने पढ़ी कि टोटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टोटल फोर्स है Fa प्लस Fc और डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा R। एंड रिमेंबर डेल्टा R क्या है, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, ये बन जाएगा Fa डॉट डेल्टा R प्लस Fc डॉट डेल्टा R इक्वल टू 0। और ये क्या बन जाएगा, Fa डॉट डेल्टा R प्लस 0 इक्वल टू 0। ये 0 कैसे है, बिकॉज Fc डॉट डेल्टा R इक्वल टू 0। और ये क्यों किया, क्योंकि डेफिनेशन में यही है, स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि वर्कलेस कंस्ट्रेंट्स हैं। Workless constraint mean work done by the constraint forces is 0। तो Fc dot delta R is 0, तो ये 0 ले लिया, इनको ऐड किया तो Fa dot delta R equal to 0, यानी कि work done by the applied forces is also 0। तो यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू।